Assalamualaikum students. Today we will start from chapter number 2, section number 4, question number 6. Explain why we gain or lose time when we cross the international date line. Now open page number 36. The answer of question number 6 starts from this line. If you went further west from the prime meridian and crossed the international date line, you would move forward one day. Means if you cross international date line traveling westward, the day goes forward by one day and the date increases by 1. For example, if you cross the date line at 12 noon on 10 June, you would go forward to 12 noon on 11 जून. फॉर एग्ज़ाम्पल जब इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस की डेट क्या थी 10 जून. आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड डेट क्या होगी 11 जून. मीन्स एक दिन आगे को मूव हुई. इसी तरह सपोज अगर यहाँ पे क्या था मंडे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्यूसडे. डे भी एक दिन आगे को मूव होगा. सिमिलरली इफ़ यू वेंट ईस्टवर्ड एंड क्रॉस द डेट लाइन you would be a day behind. Means if you cross international date line traveling eastward, the day goes behind by one day and the date decreases by 1. For example, जब इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस की डेट क्या थी 10 जून. आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड डेट क्या हो गई 9 जून. मीन्स डेट क्या हुई वन डे बिहाइंड होगी. और अगर यहाँ पे क्या था मंडे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संडे. डे भी एक दिन बिहाइंड मूव करेगा. ऐसा होगा कब जब इंटरनेशनल डेट लाइन को आप क्रॉस करते हुए ईस्टवर्ड साइड पे जाते जाएंगे. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देन क्या होगा you will subtract a day. Subtract a day. And if you cross international date line from east to west, east to west, then you add a day.